Okay, hello, good morning, and welcome to this episode brought to you by South Asia Research Institute for Minorities. My name is Furqan, and I am truly honored to have the company of a remarkable peace activist and social entrepreneur whom I know for a long, long time. And I could say I knew him when he was in his incubation period, like in terms of entrepreneurship. Mr. Samir Ali Khan, thank you, Samir, for joining us once again to our podcast. Samir is the founder of Collective Pakistan, which is a youth-led initiative for by empowering. The purpose of his initiative is to empower youth people with digital tools, leadership skills, and civic engagement opportunities. He also leads a project called Suffer Buddies, a social enterprise that uses heritage tourism, community storytelling, and entrepreneurship to promote social harmony, counter extremism, and build resilience. His activism is deeply rooted in decolonization, community led healing, or its upbringing, and uplifting marginalized voices, particularly women, youth, and undeserved communities such as Christians, Dalits, and other minority communities of Pakistan's diaspora through collaborations with organizations like the United Nations, the Kofi Annan Foundation, Global Fund for Children, and Salzburg Global from Austria. Samir has been at the forefront of digital education, youth empowerment, and inclusive community building. Today, we will explore his journey, his vision, and how technology and storytelling can be powerful tools for peace and resilience. The format of this conversation would be in bilingual. So I will be throwing questions in English, and I would request Samir to respond uh, in bilingual language, like which would be Urdu and English. So to begin with, as I said, we will start with his journey. Samir, you were born in Thatta, which is known for its rich history and culture. Can you please tell us how did your upbringing there shape your activism and passion for community-led healing? Over to you. Thank you so much, Furqan. Thank you for inviting me. It's been a pleasure to be part of this amazing podcast series. And when it's an honor to have the conversation around the youth engagement along with the youth perspective, because it's very important to have the conversation before going through the questions we are finding in our historical background. We should ask from the youth, because it's a future, and not only the future, but it's also a present. So thank you again for giving me this opportunity. And as you have seen the journey that by your kind multiple humble such opportunities you have contributed in my journey. It's a honor to have a conversation with you. So as far as the question is concerned, and if I tell you from very beginning, from my journey, from my city, we call a city of kings, we call the city of heritage, we call the city of diversity, Thatta. Nothing left but the only hope in terms of the people like us, and maybe the people who really want change in the community. So my childhood was bit compromised uh, in terms of multiple ways. We can say in the lens of when we talk about interfaith inclusion. जब हम बहुत यंग थे, जब हम छोटे थे, स्टूडेंट थे, क्लास में जब हमें बताया जाता था कि फलाने बच्चे के साथ बैठ के अपने खाना नहीं शेयर करना, लंच बॉक्स नहीं शेयर करना. सो ये वो स्टोरीज थी जिन्होंने इंजेक्ट किया हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा को टुवर्ड्स हेट एंड टुवर्ड्स discrimination against the different religion, because it's not only the idea of not being kind, but also the idea those who are different from us should not be exist. Because when we see the lens in Pakistani societal ये जो हम कहते हैं कि जी मॉब लिंचिंग थॉट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो किताबों में तो शायद लिखे हों, लेकिन किताब पाकिस्तान में पढ़ता कौन है? राइट. लेकिन ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं लोकल कम्युनिटी नैरेटिव से. जब आपको कोई कहता है कि जी फलाने से बात नहीं करना, फलाने के साथ खड़े मत हो, फलाने के इवेंट में मत जाओ. उसका रीजन ये है कि जब वो उसके पास एक एग्जाम्पल होती है, और वही होता है कि मजहब एक सुपीरियर जो है ना लेंस है टू सी थिंग्स. बट if I talk about the grassroots, if I talk about the roots which I connected, which we are connected, it's a very very rich beyond our beyond. आज तक मैं कहता हूँ कि शायद आज तक हम अक्सर लतीफ साइन की एग्जाम्पल देते हैं, हम बिरसा की एग्जाम्पल
एग्जाम्पल लेते हैं, हम पाकिस्तान में सिंध की सूफी धरती की एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे लेकिन ये यकीन है कि अभी तक सिंध की धरती के अंदर जो इंक्लूसिविटी है, जो इनरिच कल्चर है, वो अब तक शायद कलम बंद उस तरह से हो ही नहीं सका जिसको जितना हो सकता है, और क्योंकि ये रहती दुनिया तक रहने के लिए ही लिखा गया है। और इसको आगे मजीद लिखा जाना चाहिए, जो कि नहीं लिखा जा रहा। बुनियादी तौर पे मेरी जो यंग समझें कि नर्सिंग की एज थी, इट वाज नॉट दैट मच इंक्लूसिव, जस्ट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, मे बी जहाँ मैं पढ़ता था, मे बी मेरे पेरेंट, पाकिस्तान में पेरेंटिंग का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो बहुत इजीली बच्चों को कुछ ना कुछ कह देते हैं, और लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे जाके कितने बड़े हो सकते हैं। सो आई थिंक जब इंसान एक इर्तिकाई अमल से गुजरता है तो उसको आइडिया होता है कि हम उनसे कहाँ कहाँ गलती। आई थिंक ये एक लॉन्ग वे जर्नी थी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मेरे शहर से कनेक्ट करती है वो उसकी इनरिच न सिर्फ हिस्ट्री है, बल्कि वो उसमें मजहबी जो हम कहते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी की लिविंग एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है। अगर आप शहर ठट्टा के अंदर दाखिल होते हैं, आप अक्सर सुनते हैं मकली, जो कि कहते हैं साउथ एशिया का सबसे बड़ा वहाँ पर ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है, वहाँ पर आपको इनरिच हिस्ट्री मिलेगी। लेकिन अगर आप देखें तो आपको वहाँ पर जो मुख्तलिफ मकबरे हैं, यानी कि वहाँ पर जिसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखते हैं, तो उसके बिल्कुल सामने आपको दिखता है एक बहुत ही पुराना मंदिर मौजूद है, और वो अब तक मौजूद है। और जब आप उसको थोड़ा सा पीछे से खड़े होकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक मकबरे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिंबर कहते हैं, और जो मंदिर है उसके ऊपर जो मिंबर है वो इंटरसेक्ट करता है। वो आपको जो यू क्रॉस के अंदर दिखते हैं कि एक लाइन के बॉर्डर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो चीज सबसे खूबसूरत मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल एक तरह से वाइब देती है, जिसने मुझे एक इर्तिका के अमल से गुजारा, वो ये लिविंग हिस्टोरिकल चीजें थी, जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अच्छा, मेरी जो टीचर्स मुझे कह रही हैं, जो मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं, जो मेरे दोस्त यार मुझे कह रहे हैं, वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी फाइंडिंग, अपनी सोच, अपनी अकल को भी इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने भेजा है। बुनियादी तौर पर ये जो इर्तिकाई अमल था, वो मुझे मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा से मुझे अब पीस बिल्डिंग से कनेक्ट करने में बहुत मदद की, और मुझे न सिर्फ अब मदद की बल्कि मैंने अपने कुछ और दोस्तों को भी इंस्पायर किया। लेकिन उसकी एक वजह सिर्फ ये थी कि वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक रिग्रेट था ना, कि एक दिन जब मैं जहन में सोच के बैठा था कि यार मैंने क्रिश्चियन बच्चे के साथ लंच बॉक्स जो है ना शेयर नहीं करना, वो जो रिग्रेट है वो आज तक मुझे फील होता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये रिग्रेट किसी और बच्चे को ना हो। ये रिग्रेट, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये रिग्रेट होता है, मैं इस पर प्राउड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा प्राउड के तौर पर देखा जाता है कि अच्छा, तुमने हाँ फलाने बंदे को मजहब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट किया है। तो क्योंकि बिकॉज हम बहुत ज्यादा क्योटिक सोसाइटी में रहते हैं, क्योटिक सोसाइटी है जिसके अंदर हर तरफ से आवाजें हैं। जब हर तरफ से आवाजें हैं तो सुनने वाले कान बहुत मध्यम हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो चाइल्डहुड आपने बात की ना, कि किस तरह से एक शहर जिसकी सकाफत सदी पुरानी थी, जिसकी सकाफत इस पाकिस्तान बनने से पहले थी, जिसकी सकाफत बनी ही मुझे लगता है कि सिंधु दरिया, जो हम कहते हैं कि सिंध हिंद के थॉट पे, यानी कि हम मुस्लिम्स, और जो हमारे पास अक्सर एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, it's called Raja Dair and Muhammad bin Qasim. It's also born from that particular area. So I think very enriched city, very enriched culture, but nothing left behind but the history, and we should learn from the history and live in with the present realities, and we should contribute in a positive way. That's why I choose this part to be. Thank you so much, Sami, for comprehensively walking us through your journey, specifically your upbringing, and specifically the childhood trauma that you faced, and you try to get away from those negativities from the society. And you are, as I said it in my beginning, I know from the beginning of your journey, I have known you because I have given you the platform just to enlighten others, like how as a young and a person from that marginalized society can do wonders if he or she decides to take the step further. So thank you so much for your response. So I mean, as I said, you are now an emerging peace activist and interfaith activist as well. Can you tell us about that journey? What inspired you to take this part? Although you have touched upon like the concept of untouchability in your introduction, like what kind of communities have you been able to connect and bring together? Thank you, Furqan. It's a wonderful question, because what I really felt, what inspired me, the inspiration come from my one Hindu friend that he's from Sanatan Dharam, and one day when we were fast, like Muslim have to fast in Ramadan. So one day he, like, I was offering him water because
Hindus don't have fast on that day, obviously because of the religion. But he refused to take the water, and he said that no, I respect the religion of Islam, and I respect the religion of your I respect the honor of that fasting you carry for a day. So I belong to Mithi Tharparkar. And that day, I just have in something which is magically changed in my thoughts. I paused on some time, and I asked him why you are what is the background of why you guys think about we should also respect for the fasting, because it's a very personal thing. I personally don't encourage people. If someone is fasting, it's personal experience or personal faith. We don't have to impose it. But why you choose? Because it's important. It's a big thing. Your religion don't allow you. Your society don't allow that have privilege to do. So he told me about the history of Mithi Tharparkar, his city. He told me that how when the Muharram, very religious month for us, it's a bit sad month for us. And he mentioned that we also got sad in that particular month. हम खुद भी सबीले लगाते हैं. We also offer water. We also offer foods to the communities, and we also make arrangement for the preparation in the in Muharram, even in Ramzan. So that day I realized, okay, but uh, but the experience I carried through my childhood was very different. Tells a very different story. They tells me they are against us. They tells me they just want to end us. They want to they just don't want us to live together and all and like so many things. So that day I realized my religious lens, just because of not my religion, but the people who carry the particular stakeholdership in the particular religious lenses. Tells us the different stories which is not real. So I try to explore it. I try to start documenting things. I remember one day I went for the documentary assignment from my university, and I went to the one particular shrine, and it was so normal to me to shoot that particular shrine. I was started documenting particular shrine. But later on I realized that the mosque and the temple, yani masjid और जो क्या कहते हैं मंदिर है, the both were together like this. And that day I realized this is the symbolic sign in sin when we meet and greet people. Like this is exactly what we do. So I mean, this is what a beautiful perspective to live in, that with peace building, interfaith inclusion should not be taught in classes. It's almost there. It's almost every corner, every part of in the sin. But what should we have to realize it. The only thing we have to realize it, we should see through the lens of acceptance, inclusivity. And that day I realized that stories are not just a state, it's a feeling. It's not it's not like something which we just tell to someone. We can change the 360 shift in the life, from perspective, from their human behavior, from their living the life, the way of life. So on that day, from my Hindu friend tells me how how religion is less than how humanity is bigger than anything. That day I realized that something which is missing in me, and that day I realized, and I took that part of his beautiful soul, and I just try to fit in my soul. And then it's it's an ongoing journey. It's not something which I started feeling today and then later on I become a very different people. No, it's a very it's a revolutionary life movement, that every day you step, every day you learn through different people. So I start learning from different people how they I went to the Christian communities, I went to the Smiley communities, I went to the Baha'i communities, because they are very rare. They are very very much in a very small spaces, because they are very shrink in the particular society. So when I talk to them, I realize they are like me, they are like us. There's no different but one. Yes, that's a very major difference, but it's just a difference. It's nothing else. We can eat together, we can have good conversation together, we can talk about the history, we can talk about art, we can help each other, we can donate blood each other. The most beautiful thing that I realize in the particular time, if I am in the hospital, imagine, and some Hindu friends came and donated the blood to me, they're saving my life without without thinking they are different from the religion, because they chooses that particular path. So I chooses that path. That inspired me a lot by having such friends, having such communities, having such community exposure. So I really believe
that the having such exposure is a blessing, and not only getting exposure is the only key to have your best version of your life. We should ask ourselves what I can contribute in the society. For instance, uh, I also now used to celebrate Diwali. I am invited. I always invited on Christmas days in churches. I am the person who talked, to talk in front of the 300 young Christian community youth, which was organized by the Catholic Church. It was a great honor for me, being a Muslim, but I was invited as a Samir Ali Khan. I was not invited as a Samir as a Muslim. I was invited as an activist, as a young voice. So we should know our boundaries that make us unique. That if you invited me to talk about interfaith harmony, what is the actual essence of the interfaith harmony I carry throughout the journey? I can tell you, I went to Geneva, I went to the United States and else the countries, but why I'm going there, what I'm trying to do, the most important essence, what is the main point of changing the behavior in my particular, my particular living of the life. So what I got inspired from the journey is from my friend, along with the stories I compile it. So I think it's a very beautiful and very personal journey I go through, and I really feel happy when I reflect on it. Thank you so much, Samir, for briefly providing us like how you got into the interfaith activism and peace activism as well. And one of your, I mean, stemming from your past, you said that there was a Hindu guy who wanted to donate the blood. That brings me another story that a doctor who refused to treat the patient, a Christian patient, because he was Christian and he was drenched in all this because he was working in a manu scavenging, so he denied to treat him. So I mean, these kind of stories and the concept of untouchability still exists in Pakistan. You've talked about your personal journey and all that stuff in the beginning of this podcast. Could you also share the story, or what was the motive behind organizing or initiating uh, the projects like Collective Pakistan and Suffer Buddies, and what impact have these initiatives had on your community work and the communities that you work with? Thank you, Furqan. Again, it's a very important question regarding the initiatives, because what I felt, these are just not initiatives. These are some contribution of my thoughts, of my humble experience I live in. So collective, basically the idea behind the Collective Pakistan, I when I was in the last year of my university, I have to research, because we have to research, we have to write a very traditional thesis paper just to to get the degree, nothing else. So I thought I should write about how the minorities have been, minorities got projection in newspaper in Pakistan. So I compiled the data of 6 months around the three big traditional newspaper I read through, and I think the concrete evidence and I collected from my research is only 7.2% minorities got a chance to be highlighted in the newspaper, and out of 7.2, 5.3% is in the negative story. It means it's always been, some temples have been vanished, or the forced conversion. These are reality. But the minorities is not only doing this, they have huge contribute. I mean, Pakistan, like, I think if I see Pakistan, it's a main pillar that minorities, which is not also a very good word to use it, but in general, to make people understand, they have a huge contribution. So I thought, why not I start making something over their positive narratives around what they are doing, how they are contributing. On the last moment, the COVID came, and COVID changed everything 360, and then I realized the hate speech which were in the society is now converted in online. So I realized that there is so much hate speech on the over social media. I've seen on Facebook especially. So what I tried to compile a story from the religious minority lens in the COVID time, and I highlighted those stories which touch human hearts. In terms of one story I documented, in which
क्या कहते हैं मुस्लिम क्या कहते हैं अमरकोट से एक क्या कहते हैं इमाम थे मुस्लिम कम्युनिटी के, चूंकि उमरकोट जिसको बेसिकली उसका नाम अमरकोट कहते हैं। सो उसको उस इलाके के अंदर हिंदू मेजोरिटी थी। सो वहां पर थैलेसीमिया के बच्चे थे। सो उस जो मस्जिद के मेंबर से खड़े होकर उस इमाम ने जो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कोविड के टाइम पे ब्लड की डोनेशन का जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को इनवाइट किया कि आप जो है ब्लड डोनेट करें। सो दैट स्टोरी इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी इन टर्म्स लाइक कि किस तरह से मस्जिद मॉस्क के जरिए ये बात हो सकी। फिर मैंने देखा कि कराची के अंदर एक शारा फसल के ऊपर एक देयर इज अ पेट्रोल पंप ओन बाय पैलाज रॉय। वो एक हिंदू दलित कम्युनिटी से, सॉरी दलित कम्युनिटी से तो नहीं, हिंदू कम्युनिटी से है। और उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक मस्जिद बनाई हुई है। सॉरी, मैंने एक और चीज बड़ी खूबसूरत देखी कि मिठी थरपारकर में अभी हम वी वर टॉकिंग अबाउट दी ब्लड। मैंने ये देखा कि हम अब्दुल सत्तार ईदी को पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटी का सिंबॉलिक साइन जानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटी के जो एसेंस को मुतारिफ कराया। मैंने देखा थरपारकर के अंदर भी वी ऑल्सो फाइंड अ पर्सन who is like his name is Mama Krishan and he's running the blood bank and उनको सब लोगों के नाम याद हैं, ब्लड ब्लड ग्रुप्स याद हैं, वहां पर जितने लोग रहते हैं, मुस्लिम है, हिंदू हैं। सो ही वाज आल्सो टेलिंग द स्टोरी कि जिसमें जब वो ब्लड डोनेट कर रहे थे किसी को, तो वहां पर एक बंदा आया, उसने पूछा कि क्या ये मुस्लिम का ब्लड है। तो मामा कृष्ण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास 3 ब्लड के सैंपल देता हूँ, तुम मुझे फर्क करके बता दो कि ये किसका है। सही है, तो फिर अगर तुमने फर्क करके बता दिया तो मैं जो है इस ब्लड बैंक को बंद कर दूंगा, क्योंकि जब यहाँ कोई ब्लड देने आता है या लेने आता है, मैं उसका उससे मजहब नहीं पूछा। एंड दैट स्टोरी लाइक मेक मी रियली सैड एंड ऑल्सो अलॉन्ग वेरी इंस्पायरिंग इन टर्म्स की कितनी खूबसूरत बात है कि यार हम तो हर चीज को मजहब के लेंस से देखते हैं। लोग कितने प्यारे हैं कि एक जो कि छोटा शहर जहां पर वो अपनी हम्बल कंट्रीब्यूशन कर रहा है विदाउट एनी गेटिंग रिवॉर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग बाय देयर ओन, और उन्होंने 1000 ऑफ द पीपल जिनको जो है ब्लड डोनेट किया। सो दीज स्टोरीज आई कंपाइल इट थ्रू माय कलेक्टिव पाकिस्तान और आई गॉट द आइडिया। कलेक्टिव पाकिस्तान का मतलब ही है मजमूई पाकिस्तान, जो कायदे आजम का विजन भी था, जो इस सिंध धरती की एक सोल थॉट है कि जिसपे हम कहते हैं कि इज्तमाइयत है, यानी कि सिर्फ एक टोले की शक्ल में नहीं है, लाइक इनफरादी नहीं है, फुरकान साहब समीर साहब नहीं, समीर और फुरकान, समीर फुरकान दिलीप सब मिलके। सो कलेक्टिव पाकिस्तान इज जस्ट अ थॉट बिहाइंड इट, जिसको हमने फिर रजिस्टर्ड किया है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू गेट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान में अगर यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है तो फंड बिल्कुल नहीं होते, साथ ही साथ 1.5 साल का प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट। सो बहुत ज्यादा जो है ना मैंने काम किया डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर, मैंने बहुत ज्यादा काम किया आर्टिविज्म के ऊपर आर्टिस्टिक तरीके से। लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि there is something which is very major missing. What is the major missing in my perspective of the activism? The experiential learning was missing. For instance, I am making documentary, you are watching documentary on phone, you are not there, right? You are not interacting with the communities I communicated with. When I see मैं 360 शिफ्ट हुआ, वो कैसे हुआ? मेरा दोस्त आया मेरे पास, एक लिविंग एक्सपीरियंस था। मैं किसी ऐसी जगह पर गया जहां पर मंदिर मस्जिद की दीवारें साथ थी, लिविंग एक्सपीरियंस था। So I realized that there is something missing, and I have to come up with the exposures to give people to get them close with the their heritage, their religious places. So I started this amazing venture, which is very got famous in especially in youth. Around more than 3,000 young people have joined over the period of 2 years in our journey, in which we explored together the religious and cultural. So okay, so most important thing जो चीज मुझे लगी कि एक बहुत बड़ा मेजर मिसिंग था इस पूरी सोसाइटी से, वो ये था कि हम एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है। हम मतलब मेरा अगर जहन में फुरकान साहब के लिए कोई थॉट आया है तो वो कौन दूर करेगा? वो आमिर तो नहीं करेगा, वो उस्मान तो नहीं करेगा, वो फुरकान साहब करेंगे। सो आई गॉट दैट आइडिया, व्हाई नॉट वी like introduce something which give people a human to human connection experience. So I come up with this idea सफर buddies. सफर उर्दू वाला है और buddies इंग्लिश वाला है। इट मीन्स जो साथ सफर करेगा वो दोस्त बन जाएगा। इट्स अ सफर buddies. So the concept behind the सफर buddies is get together, come together and explore together. जब हम साथ बैठ के खाते हैं खाना जिस पे बात करते हैं, जब हम हाईरेटेड साइट पे जाके ड्रम सर्कल एक्टिविटीज करते हैं, लाइव म्यूजिक करते हैं, हम एक दूसरे से जो पछतावे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेरा एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जब तक मैं उस पर माफी नहीं मांगूंगा और माफी के साथ साथ और एक अमली मुजाहरा नहीं करूंगा, आई थिंक दैट वुड बी ऑलवेज रिमेन सेम. सो दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस सफर बडीज. So thank you so much, Sameer, for providing your inspiring story behind those
wonderful initiatives. And I know about Collective Pakistan when you were incubated with Global Neighborhood for Media Innovation, and you and I worked together. And I know how your digital activism come into play through that project. And you were also very competitive. I mean, winning entrepreneurship journalism fellowship is was not just a piece of cake. You made your uh, way around and by beating all the other competitive candidates as well. So I know about your journey, and it's very happy and inspiring to see you doing in practical terms. And Suffer Buddy is also an amazing initiative, and wish you all the best for what you are doing. So in your work, like countering violent extremism and addressing collective trauma, you talk about the vision of Qaid-e-Azam, which talks about to have perspective for all. What challenges you have faced, and I'm sure there must be a lot, and how have you communities demonstrated the resilience as well? Furqan, it's a like when I talk about the activism in Pakistan, it's not easy. I think in Pakistan there is no profession which is which give you secondary or some other thoughts or give you a chance to reflect yourself. Is always very hard to deal with, and especially if you are loyal as a teacher, if you are loyal as a lawyer, if you are loyal as a activist. It's a very hard path you have chosen. It's just not always about the profession. It's about the passion we carry. So there are so many challenges, but most important challenge was when I was I went in the process of registration in Pakistan, my organization, because whenever I went to the donors, I tell them I'm doing this work, I'm in ideas of massive level, I have a youth voices, but people donors always have have that particular traditional criteria that if you don't have the organization, not company, not something sole proprietorship, you should have to society act or something, welfare societies and XYZ. So this journey make me realize that in Pakistan, if you are trying to work on something which is very important to you, is very hard, because the barriers from the bureaucracy, which is in very typical state mind of they always a negative thoughts regarding the NGOs. They think that we all are here for making money, and even youth-led organization are not eligible for getting money for 2 years at least. So they're if I see this whole experience, it's just not like a societal barrier, but also give me a reflection that I on a right path, because everyone is looking me as a suspicious ISIS. They are thinking this I am just doing it for making money. We live in that era where you can just make a 30-second video and you can earn a lot, right? Why people choose this path? It's not easy. If someone think that it's easy, please go and get yourself registered, and then you realize the path you are trying to work on professionally, and along with the with engaging the stakeholders in Pakistan, it's not that particular easy game. So the journey I came across, yes, whenever I went to the communities, it's always a challenge, because when I say this, give some space to the religious communities, other religious communities in Pakistan, they have the question, why you are saying this? What is the agenda behind you? Like, who funded you to say it? I was literally surprised one day when I was in the mosque, and I just asked from that particular mosque caretaker, please please talk more about the climate change, what's going on, like to tell them कि भाई जो सफाई आपका जो निफ्स ईमान है अपने खुतबे में जुम्मे के क्यों नहीं बताते आप. सो वो मुझसे नाराज हो गए इस बात पे, क्योंकि मैंने वर्ड शायद थोड़ा सा ये क्लाइमेट चेंज और ये सारे इस्तेमाल कर लिया था. एग्जैक्टली हमारा मजहब हमें वही सिखाता है. वेन एवर आई वेंट टू द कम्युनिटीज, वेन आई टॉक अबाउट द इंक्लूसिवनेस, दे हैव अ क्वेश्चन, एंड व्हाट आई रियली बिलीव, उनकी भी गलती नहीं है. जब मैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर गया था और जब मैं बात कर रहा था, तो मैं वहां पर मेरा भी जो स्ट्रेस था बात करने का इस बात पे था कि व्हेन वी आइसोलेट द रिलीजियस कम्युनिटीज फ्रॉम आवर ओन थॉट्स, कि हम कहेंगे जी चूंकि सेक्युलर कम्युनिटीज ही अच्छी होती हैं तो वो भी एक्सट्रीमिस्ट होती हैं. सही है, रिलीजियस कम्युनिटीज एक्सट्रीमिस्ट होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन उनको बात
सुनाने का या बात करने का मौका भी तो हमें देना पड़ेगा ना। अगर हम इस लेंस से उनको इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे कि जिसमें हम ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं वो तो सुनना ही नहीं चाहती, तो इट्स नॉट लाइक दिस। व्हेन यू नो शुरू के अंदर इट वाज अ बिग चैलेंज टू वर्क ऑन इंटरफेथ हार्मनी स्पेशली विद द रिलीजियस पीपल, बट मैंने कराची के अंदर मोर देन 3 मोहल्लों में, 3 मोहल्लों के अंदर, क्या कहते हैं, कम्युनिटीज के अंदर आई इंट्रोड्यूस द इंटरफेथ मोहल्ला कमिटीज एंड which exist along with, they are self sustainable, they are now applying on different small grant opportunities, along with they are celebrating each other's celebrations. Like this is something which is, we have to cope up with the mutual ground, a common ground which we have to introduce it, because अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि नहीं रिलीजियस कम्युनिटीज होती ही एक्सट्रीमिस्ट है, तो ऐसा नहीं है। वो बात सुनना चाहती हैं, लेकिन मसला ये है कि हम क्या बात उनको सुनाना भी चाहते हैं। मसला ये है कि जब when we come up with a common ground approach, when we have a conversation between, have in between the lines, they are both extreme they took a extreme positioning, और उस extreme positioning के बीच में एक ऐसी लाइन जरूर होती है जिसपे दोनों जोड़ सकते हैं। वो लाइन पहले जोड़ना जरूरी है। अगर मैं ये सेकुलर थॉट के साथ बैठ के सोच के बैठ जाऊं कि नहीं जो मैं इम्पोज करना चाह रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, तो वो नहीं ठीक है। एक सोसाइटी है 75 साल का उसका एक बैकग्राउंड रहा है, जिसके अंदर उसने क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम्स नहीं देखे, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसमें रिलीजियस कम्युनिटीज को भी बहुत ज्यादा एम्पावर नहीं किया गया, उनके मदरसों को फुली इक्विप्ड करके उनको लर्निंग्स के अंदर नहीं लेकर आया गया। और उसमें ऐसा मतलब लाइक देयर आर 100 ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आई कैन कोट इट, कि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जी अगर कोई मार्जिनलाइज है तो हमने उसको मार्जिनलाइज रखा है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस इट वाज चैलेंज इन टर्म्स ऑफ एवरी वे, फ्रॉम institutions to communities to even from my friends and family। जब मैं अपने जब मैं किसी अपने डाइवर्सिटी टूर कर आता हूँ, तो मेरी फैमिली जो है मुझसे पहले ही खाना खा के बैठ जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जी मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की साइड से आया हूँ, तो पता नहीं वो मेरे साथ खाएंगे नहीं खाएंगे। बिकॉज ये पहले होता था, उसको मैंने चेंज किया थ्रू डायलॉग, थ्रू आस्किंग देम कि मेरे साथ आप लोग भी चलें, मेरे साथ देखें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, और वो उसके लिए अगर हम तैयार हैं तो आई थिंक इस सोसाइटी को बेहतर करने से पहले हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। और आई थिंक जहां भी चैलेंज होता है वहां एक अपॉर्चुनिटी होती है। आई मेड अ अमेजिंग फ्रेंड जो कि पहले रेजिस्ट करते थे, अब वो मेरे एक तरह से एलाइज हैं। अब मुझे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करनी हो, उनके साथ मिलकर काम करना हो, इवन जो रिलीजियस कम्युनिटीज आर दे आर वेरी वेलकम। आई मीन आई ऑल्सो इन्वाइटेड ऑन देयर जो उनकी एक तरह से सेरेमनीज होती हैं, ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, वो मुफ्ती बनते हैं, जो वो कुरान हिफ्ज करते हैं, दे इनवाइट मी ऑन देयर पर्टिकुलर गैदरिंग्स। इसी तरह सनातन धर्म के दोस्त हैं, मैंने आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी का पहले बताया। सो मुश्किल तो आएगी, कोई भी काम करने में मुश्किल तो आएगी। लाइक आप लोग रिसर्च वर्क करते हैं, आपको बेहतर पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं इस तरह का इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क डिजाइन करने में। हम तो फिर थोड़े बहुत यंग लोग हैं, हमें थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है, लेकिन it's something, if we start doing from today, we will reach out to somewhere around कुछ टाइम बाद, but it's more important to start right now। otherwise अगर हम ये सोच के बैठे रहे ये मुश्किल है, तो आई थिंक पाकिस्तान कभी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। और आई थिंक दुनिया में हर इंसान को मौका मिलता है, सोसाइटी भी देती है, खुदा भी देता है, लेकिन उसको करने के लिए उसको खुद करना पड़ता है। Absolutely. Thank you so much, Samir, for like enlightening us with the challenges that you have faced in the entire process. That also brings me to questions, like similar questions that I and we face. I mean, we also face so many that bureaucratic hiccups and all these stuff that your name should be like community or stuff like that. So thank you so much, Samir. Last question. We are already taking up your lot of time. So as a former Kofi Annan change maker and a Salzburg Global Fellow, so you walked us with your national initiatives, since you are now an international and globally renowned activist as well. You have worked with global networks. Like looking forward, what is your vision for building inclusive, sustainable, and resilient communities in Pakistan, South Asia, and beyond? I think the most beautiful question is like, what is the idea to have sustainability around such initiative? I think we have seen so much young people are so crazily introduce such initiatives, and they just left out, and they just they burn out. जब हम कोई social action projects उनको देते हैं, they have amazing ideas behind it, they just want to make change over the night. But most important essence, when I globally recognized by big platforms, I realized
the empathy they carry, in the Western thoughts, or maybe in other country thoughts, the most beautiful essence to work on anything is the empathy. So I took that particular part of empathy, and then I connect with the local context. So my vision for Collective Pakistan or Safar Buddies is just to connect with the communities by and through their lenses. For instance, I really want to encourage donors. I really want to encourage those who fund such initiative. Give fund to a local organization. Why not farmers organization? Why not women led organization, which they don't have, maybe they don't have official or bank account or like this, but give them flexible fundings to at least start working on it. So I am working on such initiative which is locally led. Why not we introduce some community kitchen concept in our communities? Why not we introduce such such a community center where the where you don't have to tell the which religious and cultural background you are. So I think I always wanted to stress whenever I go abroad and I talk about when and I got a platform internationally, I always talk about the localization from the lens of their particular persona, because imposing from the Western thoughts is never is never achievable. And the most important thing which I really look forward in this particular time where the fundings are shrinking, the opportunities are shrinking, what are the local what are the Pakistani big companies, those who have a big budget, what they are doing, why their CSR just based on on some similar thought narrative? Why not on peace building? Why not on inclusivity? आपने एक बात कही कि 100 साल की तारीख होती है, 100 साल की तारीख के अंदर अगर वो 10 साल भी उसके ऊपर बेहतर काम करें तो वो 100 साल की चीज 10 साल में अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर वो 100 साल तक बैठे रहें कि हमें 100 साल तक ऐसे ही गुजारना है और 100 साल के बाद हम देखेंगे, तो आई थिंक इट विल नेवर कम। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप बात कर रहे थे कि जी वेन एवर वी डू सच थिंग्स द पीपल आस्क अस कि भाई हु आर फंडिंग यू और हु आर गिविंग यू सच पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज एंड फंडिंग एंड ऑल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है या दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसों के होता है? आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ रहा था, जो इमाम की पोजीशन है मस्जिद के अंदर वो वॉलंटरीली हुआ करती थी। आज अगर इमाम की आप पोजीशनिंग देखें तो उस पर आपको पता चलेगा कितने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। सो जब आप रिलीजन के अंदर इतना इर्तका कर सकते हो, जब आप अपनी रिलीजियस वॉलंटरीली पोजीशंस के ऊपर आप इतने प्रिविलेज दे सकते हो, तो फिर जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके आप प्रिविलेजेस के ऊपर क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रियली लुक फॉरवर्ड कि यंग लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो काम सिर्फ फंडिंग बेस्ड ना हो। जिस तरह हमने सफर बडीज इनिशिएट किया, उसका मेन रीजन ये था कि हमारा जो पीस विजन है वो रुके ना। हमें लोग थोड़ा बहुत जो है हमें टूर के चार्जेस दें, वी कंटिन्यू अवर जर्नी, बिकॉज इट्स अ मूवमेंट, इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम मूवमेंट जिसको हम कहें कि एक बार हुआ और वो खत्म हो गया, वेनिश हो गया। वी हैव टू गो थ्रू डेली कि अच्छा हम क्या गलती करें। रिसेंटली वी हैव अमेजिंग फेलोशिप विद द नेम ऑफ क्या कहते हैं अमन साथी, अमन Sangat. It's just like a peace companions, peace friends, those who work on peace building through multiple exposural activities. So बुनियादी तौर पर मुझे जो लगता है, जो पाकिस्तानी नौजवान भी मिस करते हैं, और मेरा ये क्या कहते हैं लास्ट कमेंट भी होगा कि जो चीज़ हमें कनेक्ट कर सकती है, हमें सस्टेन कर सकती है, वो हमारा लोकल एक्टिविज्म है, वो हमारा ऑलरेडी मौजूद वो वसाइल हैं जो हमारे पास मौजूद है, हेरिटेज हमारे पास मौजूद है ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। रिलीजियस लीडर्स मौजूद है, वी जस्ट हैव टू गो विद देम एंड टॉक अबाउट। हमारे पास अमेजिंग खाने बनाने वाले लोग मौजूद हैं, कपड़े बनाने वाले लोग मौजूद हैं। सो व्हाई नॉट इफ वी टॉक अबाउट दिस, इफ वी सी थ्रू द लेंस ऑफ, जब मैं सेल्सबर्ग ग्लोबल के लिए भी सिलेक्ट हुआ था और आई वाज टॉकिंग अबाउट द साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी इन द पीस लेंस, आई इंट्रोड्यूस द टर्म्स trade and tourism. This is what which is like they can इजीली कनेक्ट है। भाई साउथ एशिया एक जैसा ही है, आप उठा के देखें। मैं कल परसों बात कर रहा था एक इंडिया फेलो से, सो मैं बता रहा था उसको कि वी हैव सिमिलर हेरिटेज साइट, वी हैव सिमिलर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, वी हैव सिमिलर ट्रेडिशनल। सो व्हाई नॉट वी हैव सम ई कॉमर्स स्पेस जहां पर आपको अगर पाकिस्तानी कोई ड्रेस चाहिए तो मौजूद हो, इंडियन कोई खूबसूरत सी कोई चीज चाहिए तो मौजूद हो। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेंस कि भाई हमें ठीक है, जो मजहब के अंदर जो मुख्तलिफ कल्चर के अंदर डिफरेंसेस हैं वो है अपनी मौजूद पे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज हमारे इर्द गिर्द क्या है? हमारी कम्युनिटीज में ढाटकी बोली जाती है, उनके पास भी बोली जाती है, हमारे पास सिंधी बोली जाती है, उनके पास भी बोली जाती है। सो द पावर इन द डाइवर्सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड वंस वी एक्सेप्ट इट, जिसके बाद आई थिंक दुनिया बड़ी खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगी।
Thank you so much, Samir, for beautifully crafting this your last comment with your last line. So thank you. You have enlighten us with your own upbringing and what motivated you to initiate this. You have talked about your wonderful initiatives, Collective Pakistan and Suffer Buddies. You have briefly explained us about your international affiliation with Kofi Annan fellow and as a Salzburg Global Fellow as well. You have very craftfully walked us through the challenges that you face in this process. So, I mean, it could be a role model. We would love to disseminate this podcast as much as we can. So that was the purpose of our podcast to provide spaces, to provide voices to young and emerging people like you who can present the positive picture of Pakistan and its community as well. So thank you so much. So with this end, we would like to conclude this our episode today and see us until next time. Bye bye.